In this day 2 lecture, we are going to add one more class here. Java, click on right click new, then Java. Class name we can use, let's suppose, add. Previously we have hello world class in which we have just used class, hello world and public method, which is default. Right, inside this main method we are going to print only hello world and I'm learning Java programming. Now in this add class, again we need to add main method, public static void main string, as capital for string because this is the class. In Java, string is class. So our S capital for this. Now in maths, if I'm talking about in maths, we are going to assume some variables. Let x equals to 10, y equals to 20. Right? Then we are going to assume one more variable c, which is like c equals to a plus b. Or we can say a z variable equals to x plus y. This is a basic format in maths. But now in programming languages, when you are going to create any application, any code, what we need to do here, we need to create variables. We need to create variables. Now, what are variables? Variables are basically those which are going to take some value. Right? So variables are basically with the help of variables, we are going to say our value is going to vary according to the requirement. We can update any variable, we can create any variable. Basically, we can say variable is basically a container which holds some value. That may be integer value, that can be a string value, that can be a character, that can be a decimal value, that can be a Boolean value. Right? So variable is basically a container which holds the value, values are like integer, decimal values are basically called floating point values. Float values or double. If you want to create integer value, we need to use int. If you want to create decimal, we can use float or double. If you want to create character, then we need to use char. If you want to create group of characters, like group of characters means you want to enter name, like Rahul having 5 words. So combining 5 words, we can use only string for group of characters. Group of characters. Right? One is Boolean.
boolean 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 means true or false, true or false. True or false means 0 and 1. Right? So now we are going to use how variables are going to create. How we are going to create integer variables, how we are going to create character variables, how we are going to create string variables one by one. Let's suppose if I want to create integer variable, so I need to use int. Here int is also called data type. We are going to defining what type of data we want to enter. So we have to declare, we have to call int x equals 10. Let me write one more variable y equals 20. There is no issue space. I can write like this way also. To make attractive, I can use some spaces. Let's suppose one more variable z, because I want to create a program for addition of two numbers. So addition of two numbers means z. Now just write a logic x plus y. Now x having with what value? 10. Y having what value? 20. Z is going to store what value? X plus y. We are not allowed to write in a reverse way. X plus y equals to z. This is not allowed. Not allowed. Because always here we are using a general term assigning. Means हम assign कर रहे हैं इन दोनों का sum किसको? Z variable को. तो always right to left. Always right to left means हमारे पास right side कुछ statements होंगी, कुछ equations होंगी, वो always left side ही जाएंगे. वो single variable ही होगा, multiple variables नहीं हो सकते. और सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है तो मैं इंटीजर वाला डाटा ही इंटीजर वेरिएबल को डाल सकता हूँ, दूसरा नहीं डाल सकते. ठीक है, अभी के लिए हम नहीं डाल सकते. इन फ्यूचर हम कैसे करेंगे वो चीजें भी, वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे. ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो इंटीजर डाटा होगा उसी को इंटीजर में ही डालना है, जो फ्लोट वाला वैल्यू होगा वो फ्लोट वाले में वैल्यू जाएगी. So now next step is we are going to print left to right assignment is not right. Left to right assignment is not allowed, only right to left assignment is allowed. क्लियर. अभी z को प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सिस्टम, देखो यहाँ पे एरर आएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. यहाँ पे प्रिंट ln भी यूज कर सकते हो, प्रिंट अकेला प्रिंट भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई इशू नहीं है. z को लिख दिया, यहाँ पे z को पास कर दिया इसमें, क्योंकि आउटपुट किस में आ रही है, z में आ रही है.
तो मैंने कभी रन किया। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। तो सम क्या हुआ 30, 10 + 20 30। बट अभी यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, क्या है ये 30 क्या है? ये तो हमें पता है ये 30 वैल्यू आ रही है क्योंकि हम बना रहे हैं एडिशन। बट अगर कोई और को हम दिखाएंगे सीधा ही ऐसी आउटपुट आएगी 30, तो उसे नहीं पता लगेगा व्हाट इज 30। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे सम लिख सकते हो, सम इज लिख सकते हो, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिख सकते हो, कोई भी हम वर्ड्स लिख सकते हैं। बट वो लिखे कैसे जाएंगे? डबल कोट्स देन प्लस, डबल कोट्स देन प्लस। अगर ये नहीं लिखना डबल कोट्स प्लस, देन हमें क्या लिखना पड़ेगा? डबल कोट्स लिख के दोबारा से इसमें ये प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा और जेड लिखना पड़ेगा, 2 बार यूज करना पड़ेगा। देखो सम इज क्या है 30। यही चीज मैं एक प्रिंट एफ में भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट सिंगल में भी यूज कर सकता हूँ। वो कैसे? प्लस जेड ये यूज करके, तो वो सिंगल लाइन में आ जाएगी आउटपुट, मतलब कि एक ही एसओपी में। एसओपी मीन सिस्टम आउट प्रिंट, शॉर्ट फॉर्म मैं बोल देता हूँ एसओपी, आप भी बोल सकते हो एसओपी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां तक सभी को क्लियर? सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव हियर, देखो अभी कई बच्चों ने अभी इंस्टॉल नहीं किया होगा, राइट? तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ, ऑनलाइन जावा कंपाइल, इस वाले को यूज कर लो, ऑनलाइन जीडीबी। इस कंपाइलर को यूज करो। यहाँ पे जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, आप सिंपली रन क्लिक करो, रन पे, और आउटपुट आ जाए। कुछ भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट्स सपोज करो मैंने क्या किया, एक इंट लिया x, x = 20। यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस x, सिंपली लिखा, रन पे क्लिक करो और आउटपुट क्या आ गई? हेलो वर्ल्ड 20। ये इनिशियल लेवल के लिए आप कर सकते हो जब तक आप इंस्टॉल नहीं करते। ये भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। So now after this addition program, we are going to create one more file in source Java, variables. Multiple types of variables we have in teacher, float, double, decimal. How we can use all these things we are going to discuss. Again, we need to create a function main, write main or click enter. One more thing, if you are going to write main, now press control space, control plus space, both, right? And press enter. If this main, now you can see here main is not there, right? So to display that property, this property, control plus space, you can see known imported classes. For this, control plus C. Click here, int for integer variable, system dot out dot print ln. Ln basically use, it automatically creates new line. We don't need to write slash n like this way. We don't need to write slash n. Ln is going to create automatically a new line. If you want to create double, float, f small, float, f
f is the variable. So we are able to create here like this 34.34. Then f is going to represent float. Sometimes we can skip here. Sometimes we can skip f. There is no issue. Float. Right here you can see float. Migrate f. Right. So you can write f for float. Again, same thing we need to use. Now we are going to write f. Now for double. Double D. D is also a decimal type. What's the difference between both? Range. Range of variable storing capacity is going to increase. Float having less capacity, double having more capacity, and we can skip F now. Copy, paste D. If you want to do character, write char. Characters are always write in single quotes, and only one character is going to add it in single quotes, like S, like T, like I, like A, any single character you can write, right? Like Z. Again, if you want to print, that thing is similar. CH. If you want to write name, then we need to use string data type. String, let's suppose name. Name is now variable. Ram. Right? We are able to write here name. Now, variable name becomes name. In same way, you can create one more string variable. Let's suppose address. Here I am going to create. I can write here Chandigarh University. Gurugram, Mohali, Punjab, anything. SOP address. Right. Third thing. Now Boolean. Boolean variable name I can use bool. I can also use B. There is no issue. Bool having true. Semicolon. Now here you can write bool T for true, bool F for false. Clear? Now again I am going to print. Both values I am going to print here. Bool T plus. Now one thing I can do, I can use new copy and paste. Now in this way it automatically creates a new line. Means दोनों output दोनों नई लाइन्स में आ जाएगी. But अगर सिंगल लाइन में ही करना है तो कैसे करेंगे? मैं क्या लिख दूंगा प्लस बूल एफ. अब ये देखो ये क्या हो रहा है, एरर आ रहा है प्लस ऑपरेटर. मीन्स हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको ध्यान से समझो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. प्लस double quotes to add space plus bool f. एक और ऐड करना है कुछ तो फिर प्लस लिखूंगा देन डबल कोट्स
इसमें लिख दिया मैंने दिस, फिर एक और ऐड करना पड़ेगा तो प्लस, सो ये इस तरीके से चलता जाएगा। राइट, नाउ सेव, क्लिक ऑन रन, आउटपुट आ जाएगी आपको, एंड सेशन इज गोइंग टू ओवर इन few seconds. 10 is integer, this is double, float value, this is double, this is character, this is name, this is Chandigarh University address, 2